Assalamu alaikum and welcome to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia and I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law we normally discuss an area of law which is of interest to you, our viewers. And secondly, more importantly, Just Law is a live show. So whatever questions that you have on any aspect of English law, please feel free to pick up the phone and give me a ring and I will try and guide you in relation to the matters that you raise as best I can. Now on this show we get a lot of queries relating to immigration law matters, which is fantastic. However, even if your queries relate to other matters such as family law matters, criminal law matters, personal injury matters, whatever it is, as long as they relate to our English legal system, I should be able to give you some guidance in relation to those matters. Just a couple of points before we get going. Obviously on a live show it's not possible to take very detailed information from callers who call in. Sometimes the nature of their query is such that matters are confidential. People are reluctant to give too much information out. If it transpires that I need to speak to you in greater depth, then I'll ask you to leave your number with the control room and I can have a more thorough discussion with you off air. Secondly, obviously it's not possible to look at documents before advising you. And again, if it transpires that I do need to look at your documents before I advise you further, I'll make arrangements to look at your documents, then I can advise you at that stage. But in my experience, the vast majority of questions that are raised on air, I should be able to give you some guidance in relation to those issues. Now, as always, we have a topic that we begin with. And over the last few weeks, we've looked at a number of different areas of immigration law, from the journey that a spouse coming to the United Kingdom takes from applying for a visa to come to the UK, extending their visa in the United Kingdom, applying for indefinite leave to remain, and ultimately applying for citizenship. What I want to do today is to look at a slightly different topic, which unfortunately relates to a lot of people in the United Kingdom, some who have come to the UK legally, some who haven't. It relates to the situation affecting those who have overstayed in the United Kingdom. As I said, it could relate to somebody who's initially come on a spouse visa to the United Kingdom, whose relationship has broken down, and for one reason or another the person has ended up overstaying their visa. Or it could relate to somebody who's entered the United Kingdom illegally, not through the normal ports, and they are now living in the United Kingdom without any valid leave to remain in the United Kingdom. So generally what I want to do today is look at the position, the unfortunate position of those people who have overstayed in the United Kingdom, and to look at what can they do to regularize their stay in the United Kingdom. It's a topical subject at the moment because just a couple of weeks ago, one of the points made by Boris Johnson and his colleagues in the Conservative Party was the possibility that there would be some kind of amnesty or some kind of arrangements made for those who have overstayed in the United Kingdom to regularize their stay. And there were many lawyers, some who should have done this, some who shouldn't, many lawyers who were saying, look, you know, there's an amnesty coming, let's get your applications in. If you're an overstayer, you're about to be given leave to remain. The reality is, although this has become a live issue because of the noises coming from the government, the reality is there is nothing in place at the moment in terms of changing the system for giving people who have overstayed their leave, who are living in the UK as overstayers, regularising their stay in the United Kingdom. There's nothing different at the moment. There are no concrete proposals. There are no easy routes. There's no amnesty at this moment in time. So what we have is what we've had for a number of years now. The position in relation to overstayers and the various routes that they have to try and sort out their visa in the United Kingdom.
There was an overhaul of that in 2012, the summer of 2012. Since then, the same system more or less has been in place. So we've had the same system in place for the last 7.5 years. And most lawyers now are familiar with what can be done when you're faced with somebody who has overstayed in the United Kingdom. Now, it's understandable if somebody has no visa to live in the United Kingdom, that they are anxious to sort something out. Because if you look at the effect that not having a visa has, it is quite significant. For example, they have difficulty sometimes in accessing medical care. They obviously don't qualify for benefits. They can't leave the United Kingdom and return. So there are cases where there are family members who are ill abroad, close family members, but they are unable to leave the country, because if they were to leave the country, they would be unable to return. And the biggest problem is that they are unable to work legally in the United Kingdom, which means that they have no real source of legal income coming in. So from a number of different places, those who have overstayed in the United Kingdom, they face great difficulties from everywhere that they look. And I suspect, and I assume that the biggest problem is not being able to work, because most people who've overstayed will come to you and say, look, you know, we need to sort something out so I can work. Let's look at the law in greater detail after we've taken our first call. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई। अच्छा, यस भाई, एक सवाल करना था आपको। जी। मेरे अंकल है ना जी। वो 19 साल से यहाँ पे है। ओके, ऑलराइट, ओके। साउथ अफ्रीका से आए थे। जी ठीक है, ओके। ठीक है, जी। वो साउथ अफ्रीका की पासपोर्ट है। जी, ओके। सब कुछ साउथ अफ्रीका का। जी। पर अभी उनको यहाँ पे कोई वीज़ा लेने के लिए ओवर स्टे हो गया था। वो वीज़ा के लिए आए थे यहाँ पे, बाद में यहाँ पे ही रुक गए थे। जी ठीक है। 19 साल से यहाँ पे। जी। तो अभी उसको वीज़ा के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको यहाँ पे हक मिलेगा? जी, तो वो उसके पास, उसके फैमिली सिचुएशन क्या है? उसके वाइफ है, चिल्ड्रन है, क्या है सिचुएशन? यहाँ पे कोई नहीं है, वो अकेला ही है बंदा। वो अकेला ही है और उसका अभी 19 ईयर्स से अभी यहाँ रह रहा है। तो उसके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है उसके पास? जी, साउथ अफ्रीका वाली है। ओरिजिनल पासपोर्ट है, ठीक है, ओके। अभी आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है? कभी उसने पहले अप्लाई किया, कोई लेगेसी स्कीम में उसका केस कंसिडर हुआ, ऐसा कुछ था? उसने क्या किया 19 ईयर्स में? कुछ ट्राई किया वीज़ा के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए? शायद तो एक मरतबा किया था और रिफ्यूज कर दिया। नहीं, शायद नहीं किया था। नहीं किया था। वो ऐसे ही छुप कर ही रहते थे यहाँ। ऑलराइट, ओके ओके। और उसका कोई क्लोज फैमिली यहाँ नहीं है? वो वाइफ एंड चिल्ड्रन? क्लोज फैमिली उसका भाई है यहाँ। और ब्रदर है, राइट, ओके। मगर वाइफ, चिल्ड्रन? नहीं, वो कोई नहीं है। ऑलराइट, ओके। सो मैं जो आपका कॉल आया उससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि ये जो लॉ है जिसने ओवरस्टे किया है, सिंगल बंदे ने ओवरस्टे किया, तो 2012 से जो लॉ चल रहा है वही चल रहा है कि उसका बेसिक सिचुएशन ये है कि जिसने यूके में 20 इयर्स स्पेंड किए, 20 इयर्स, तो उसको होम ऑफिस वाले वीज़ा देते हैं। इनडेफिनेट लीव नहीं देते, उसको लीगल वीज़ा देते हैं, वो यहाँ लीगली रह सकता है। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स है, मैं आपको बता दूँ, और होपफुली ये पॉइंट्स आपके अंकल के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब वो एप्लीकेशन डालेंगे तो ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत है। अगर पासपोर्ट एक्सपायर होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ओरिजिनल पासपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा अंकल को। सेकंड, इसमें प्रॉब्लम आता है मोस्ट पीपल का कि 20 इयर्स का कोई उसको रिकॉर्ड देना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि 20 इयर्स से वो यूके में है। तो प्रूफ में तो समटाइम्स ये होता है कि अगर वो डॉक्टर के साथ रजिस्टर्ड है, 20 इयर्स से जा रहा है, तो वो कुछ प्रूफ होगा। अगर उसने थोड़ा सा काम किया है तो वो टैक्स ऑफिस में उसका रिकॉर्ड होगा। तो काम तो है ना वो लीगली साइड में प्राइवेट में करते हैं ना। तो ये जो पासपोर्ट, आई थिंक आपने मुझको बता दिया कि ओरिजिनल पासपोर्ट है उसके पास साउथ अफ्रीकन, सो वो प्रॉब्लम नहीं है। मेन इशू ये है कि नेक्स्ट ईयर उसके 20 साल हो जाएंगे, मगर वो इनफ नहीं है ना, वो प्रूव करना पड़ता है कि उसके 20 इयर्स यूके में हो गए। मैं वो श्योर नहीं हूँ, आगे अगर वो
अप्लाई हुए हो के तो जी सॉरी आपने क्या कहा? अगर आगे अप्लाई वीजा के लिए अप्लाई किया हो मेरे अंकल ने जी तो उसके पास उन लोगों के पास तो रिकॉर्ड होगा ना. ये मैं हाँ तो इससे थोड़ा सा रिकॉर्ड बन जाता है कि जिसने पहले अप्लाई किया है. सो समटाइम्स ये होता है ना कि बंदे ने 2-3 बार अप्लाई किया हो तो ये थोड़ा सा रिकॉर्ड है कि वो टाइम में तो वो यूके में ही था तभी अप्लाई कर सकते थे तो वो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड बन जाता है. सो वो हेल्पफुल. मुझे श्योर नहीं हो अप्लाई हुए थे कि नहीं हुए मैं पूछ लूँगा फिर से. तो मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ कि जब उसके 20 साल यहाँ हो जाएंगे तो अगर उसके पास पुरानी पासपोर्ट है तो वो बता सकेंगे कि ये मेरी एंट्री डेट है यूके में. आई एंटर्ड द यूके ऑन दिस डेट. इसके बाद यूके में जो रहे हैं उसका प्रूफ बताना पड़ेगा. साउथ अफ्रीका से कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए ना? नहीं साउथ अफ्रीका से कुछ नहीं चाहिए. प्रूफ का मेन इशू है बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, डॉक्टर्स रिकॉर्ड. कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा कि वो यहाँ रह रहे हैं 20 साल से. अगर वो एविडेंस नहीं दे सकेंगे तो समटाइम्स उसका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होता है और रिफ्यूज़ करते हैं तो वो अपील देते हैं. रिफ्यूज़ होता है तो मगर अपील में भी यही इशू है कि आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप 20 साल से यहाँ हैं. ये कर सकते हैं कि अगर उसके कोई लेट्स से वो मस्जिद के साथ या कोई कम्युनिटी सेंटर के साथ कोई इन्वॉल्व है अगर वो कंफर्म करे कि नहीं हम उसको जानते हैं इतने साल से हमको पता है ये बंदा यहाँ है तो वो भी हेल्पफुल है. सो वो प्रूफ भी डाल सकते हैं. मस्जिद वाले ट्रबल में नहीं आते उसमें? नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो सिर्फ ये कहते हैं ना कि हमको पता है कि ये बंदा मस्जिद में आ रहा है इतने साल से हर रोज आ रहा है हर हफ्ते आ रहा है. मेरा फ्रेंड का डैड है ना उसका भी यही प्रॉब्लम है. वो भी ओवरस्टे ही हुए हैं यहाँ पे. वो भी 15 साल से यहाँ पे है. तो उसके 2 लड़के भी है यहाँ पे साथ में वाइफ भी यहाँ पे है. हाँ तो उसकी जो लड़कियाँ है उसकी एज क्या है? वो तो एक की 24 और एक 28. ऑलराइट ओके. सो वो बड़े हो गए जी ठीक है. और एक जो 28 है ना जी उसकी तो शादी भी हो गई है. ऑलराइट ओके. वो ब्रिटिश लड़की थी ना उसके साथ शादी कर ली है. तो वो बच्चे के बेसिस पे नहीं डाल सकता ना क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना तो उसका भी सिर्फ अगर उसके बच्चे भी बड़े हो गए तो उसका भी सिचुएशन सेम ही है कि शायद वो पहले उसने अप्लाई किया था बच्चे के बेस के क्योंकि अंडर 18 थे ना वो उसके बच्चे जी तब अप्लाई किया था उनको रिफ्यूज कर दिया था. अपील मिली थी या नहीं मिली थी? वो मुझे श्योर नहीं है. शायद नहीं मिली थी इसीलिए अभी वो लोग उधर साइड में रह रहे. जी तो उसका भी सिचुएशन अभी यही है कि उसको टोटल 20 इयर्स यहाँ जब उसके हो जाएंगे 20 इयर्स ऑफ रेजिडेंस इसके बाद ही अप्लाई कर सकेंगे. इससे पहले नहीं कर सकेंगे. मगर जो आज का शो है वो इसके बारे में ही है तो इंशाल्लाह. थैंक यू है जी. थैंक यू. ओके थैंक यू. विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी आप लाइव है ऑन है जी. हाँ जी. Hello, hi. Hi. I did ring earlier a few weeks ago about citizenship. Okay. And Yeah. And then it was about the exam of B1. Okay. The thing is, I want to know that if you've done an exam before the B1 was sort of announced. Yeah. Okay. And you had a settlement visa on that ESOL. Yeah. Would that still be recognized for the the language and all that? I think my view is you've got to look at the date when the there's two ways of dealing with it. One is when you applied for settlement. So can you remember the date when? Yeah, I think it was in 2011. 11. Yeah. I remember the call. I don't remember you told me. Yes. 2011. So you can't fall into that category where the application was made after 2013. So automatically it's accepted. So if you don't fall into that category, there is something which says if your qualification was previously accepted and it is still on the approved list, they can still accept it. Now the problem is a lot of qualifications aren't on the approved list anymore and it becomes risky to try and rely on an old qualification. Can you remember exactly what the qualification was? Can you remember who the awarding body was? ESOL listening and speaking. Yeah, but can you remember? And it was from a proper institute, the Education Adult Institute. Yeah, but you know the awarding body. Awarding body. I've got no idea. See, very. but the thing is, yeah. The thing is, when I was from a proper institute, the Education Adult Institute. And it was from a proper institute. Yeah, but you know the awarding body. Awarding body. I've got no idea. That's. See, very.
The thing is, when we sent for his leave to remain in that time, and I rang the Home Office itself, and I said to them that, look, he's done that, and due to that reason, he doesn't need it because they'll still have it on the system, because it was used for another application. That's why I'm sort of in a double mind. I don't know what to do, because we're ready to send the application, but it's just... But you know the difficulty, it says used in a previous application and is still accepted by the Home Office. The problem is you have to look at which qualifications are still accepted. To work that out, you have to look at who the awarding body was, because some qualifications from some awarding bodies aren't accepted anymore. This is where the problem. So it's not that it was used before. It has still has to be on the list of acceptable qualifications. And a lot of the old qualifications have been taken off the list. That's why there's a lot of confusion as to what is acceptable and what isn't. This is what the problem is. So you have to look at who the awarding body was, because there were a lot of smaller organizations who are no longer on the list of approved providers. This was a proper institute that were doing it, and from the council sort of thing, you know, and this was For example, if it's an IELTS qualification, IELTS, if that was the awarding body is IELTS, and you've done an old test, the Home Office will still accept that, because IELTS is still on the approved list. And it was used before, it's expired, but it's still acceptable because the company, the provider is still on the list. You have to look at the provider to see whether it's still on the list or not. I mean, if you find out what the awarding body was, what the awarding body is, I can look on the list to see whether it's still on the approved list or not. IELTS is still on the list of approved providers, but we do need to look at what it was. A lot of people have been taken off the list because there was issues about whether they were administering the tests properly. So a lot of organizations were taken off the list. There's a problem with a lot of students who are trying to get qualifications to go on to a next course, and they were like literally paying to get these qualifications. So a lot of providers were taken off the list. So if your qualification is from one of those providers, even though it was passed at that stage and accepted at that stage, it's not accepted anymore because it's been taken off the list of historical providers whose qualifications are accepted. If you find out what it is, if you tell me, then I'll be able to let you know. The thing is, when we did the application last time for leave to remain, they've got all the documents there. They haven't sent it back. Yes. And when I did ring the Home Office, they said it must be in the system, and they won't. I wouldn't rely on what they're saying to you. I wouldn't rely on it. I wouldn't. That's why I say sometimes it's better to pay £150 than to do the test again. Okay, but thank you very much indeed for your call. Take our next call. Hello, Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम जी, you're live on air. अच्छा, हेलो जी, you're live on air. अच्छा जी, मेरी एक दोस्त है, वो यहाँ पर आई थी शादी करके ना जी, ठीक है. तो उसका हस्बैंड जो था, उसका पासपोर्ट था, वैलिड पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट था, लेकिन बाद में उसको पता चला कि वो तो उसका पासपोर्ट कोई जाली था. क्या पता नहीं किस तरह से वो आया था, क्या था, लेकिन उसको लड़की को तो मिल गई है सिटीजनशिप. तो मतलब यानी कि पूछना ये था कि उसको मतलब यानी कि वो रिन्यूअल कराए अपना पासपोर्ट, वो ठीक है या वो उसके क्या है? तो फिर उसका हस्बैंड के जो पासपोर्ट था ना, वो कैंसिल हो गया उसका हस्बैंड का? जी हाँ, कैंसिल हो गया. हस्बैंड का कैंसिल हो गया. तो जब हस्बैंड के पासपोर्ट कैंसिल हो गया तो उसने वाइफ को कुछ कागज़ लिखा था, ऐसा कुछ किया वाइफ को? नहीं, वाइफ को भी कुछ नहीं किया, क्योंकि वाइफ का असल में एक्सपायर हो गया है पासपोर्ट, उसको रिन्यूअल कराना है. तो माइट भी जब वो रिन्यूअल कराने जाए तो हो सकता है तब पता चले कि भाई ये तो स्पेस पर आई थी. तो नहीं, बिकॉज रिन्यूअल में जनरली प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज रिन्यूअल में वो ओल्ड केसेस नहीं देखते ना कि कैसे आपको इंडेफिनिट मिला था, कैसे नेशनलिटी मिला था. जनरली ऑन अ रिन्यूअल वो प्रॉब्लम नहीं आता. और सेकेंडली ये है ना कि अगर हस्बैंड ने कुछ रॉन्ग किया भी है तो ये आर्ग्यूमेंट है ना कि वो उसकी वाइफ ने तो कुछ रॉन्ग नहीं किया ना,
वो तो अपने हर चीज उसका क्लियर था, हर चीज उसका, वो तो शादी भी आउटसाइड लोगों में कुछ जानती नहीं थी, लेकिन बाद में उसको पता चला कि भाई ऐसा कुछ है। सो वो इन्वॉल्व नहीं थी ना। सो इससे ये होता है ना कि इट्स अनलाइकली, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत अनलाइकली है कि वो उसकी पासपोर्ट को या नेशनलिटी को कैंसिल करेंगे। इट्स वेरी अनलाइकली, वो जनरली नहीं करते। वो एक तो बात यह है कि वो कनेक्ट ही नहीं करते ये केसेस को कि लोग हस्बैंड की नेशनलिटी उसने कैंसिल की, सो उसके बेसिस पे किसको मिला है, वाइफ को, बच्चे को, तो उसको भी कैंसिल करो। जनरली वो इतना इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करते, सिर्फ हस्बैंड की नेशनलिटी कैंसिल करके वहाँ ही स्टॉप हो जाते हैं। सो आई डोंट थिंक वो वाइफ के साथ कुछ, वाइफ का एप्लीकेशन में, वाइफ की इमिग्रेशन फाइल पे कुछ प्रॉब्लम होगा, देयर वोंट बी एनीथिंग देयर। सेकेंडली, जो हमने पहले बात की कि लोग खुद तो उसने कुछ रॉन्ग नहीं किया है। सो इवन इफ़ द होम ऑफिस को पता है कि लोग उसका हस्बैंड को ये हुआ है, होम ऑफिस माइट डिसाइड कि हम उसका नेशनलिटी कैंसिल नहीं करेंगे। सो माई व्यू इज़ दिस के अप्लाई कर लो कुछ, मोस्ट लाइकली आई एम 90% श्योर होम ऑफिस वाले कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। जस्ट नॉर्मल रिन्यूअल कर लो। उसके पास कोई बच्चे हैं यूके में? या उसके बच्चे भी यहीं बॉर्न हुए हैं, यहीं ब्रिटिश है वो। बच्चे की एज क्या है? एक बच्ची उसकी 8 इयर्स की है और एक 5 इयर्स का बच्चा है। तो वैसे भी एक लॉ है ना कि बच्चे, अगर बच्चे की नेशनलिटी भी ठीक नहीं है अभी, मगर जो बच्चा यूके में बोर्न हुआ है उसकी अगर एज 10 हो जाए और उसने 10 साल यूके में गुजारा, बच्चे ने, तो बच्चा, द चाइल्ड इन इज़ ओन राइट उसको नेशनलिटी मिल सकती है। सो वहाँ से भी अगर जो मदर है, जो वाइफ है, उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो फिर वो बच्चे के बेसिस पे कुछ कर सकेगी ना। नहीं, उसको भी 10 साल हो जाते हैं ना, उसको भी 11 साल हो जा रहे हैं जी। वो जो 10 साल वाला रूल है ना, वो बच्चे को अप्लाई होता है जो यूके में बोर्न हुए हैं। मगर अप्लाई करने में इतनी कोई रिस्क नहीं है। अगर उसने ना कहा कि लोग ये प्रॉब्लम्स है आपके केस के साथ, तो वो बच्चे के बेसिस पे भी कुछ कर सकती है। नॉर्मल होम ऑफिस की क्या सिस्टम है कि अगर वो नेशनलिटी को कैंसिल करना चाहते हैं ना, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि लुक, आप हमको बताओ कि आपका सिचुएशन क्या है। मुझको नहीं लगता कि उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसकी नेशनलिटी कैंसिल की जाएगी ये। बट थैंक यू वेरी मच आपके कॉल के लिए। I personally don't think there's a problem. She should renew the visa. If there is a problem, they will write and say, tell us why we should not cancel your nationality. And there's a lot of factors there. बहुत ऐसी बात है कि चिल्ड्रन भी है, उसका फॉल्ट नहीं था, उसने भी काफ़ी साल यूके में गुजारा है, तो वो सब ग्राउंड्स है जिस पे वो कह सकते हैं कि मेरी नेशनलिटी कैंसिल shouldn't be cancelled. That takes us to the end of the first part of the show. We'll be back in the next few minutes.